क्या हाल है बच्चा लोग? So, Rankers batch 2023 graphs of quadratic polynomials. So it's not just the graph, it's about graph as well as the range. ठीक है, उन सब की बात करेंगे हम लोग. Chat मुझे बिल्कुल एक्टिव नहीं दिख रहा है, so I'm just wondering, is there some technical glitch or something, or I'm not really able to communicate? Okay, all right. Sounds good. So let's quickly see how does the concepts are actually putting up together. Okay. Shambhuna Shah ji, Rishabh Ray. Hello, Rishabh Ray. Fine. So, quadratic polynomial and quadratic range. Okay, now people are popping up quickly. Hello, Sulochna. Good afternoon. Hello, Agnideep. Hello. Medashri. Hello, beta. Good afternoon. Prince Kushwaha ji. Namaskar. All right. तो नींद से जाग गए लोग भाई सब. AJ, sir, you got it. Congratulations, buddy. I'm so happy for you. So happy for you. I've been following you from a long time. In fact, yesterday itself I was wondering that what exactly has happened to AJ, and there were few more folks, right, other than you, who were also commenting upon. So I think Astha IIT Bombay also, right? And how about that guy? Oh, I forgot his name. Captain Jack Sparrow, if he's a student. But very glad for you, AJ. So glad for you. 3581, it's a handsome rank. Okay, and I'm sure that you're gonna get to a good IIT with a good branch. Enjoy your life. Catch me whenever you can, right? Whenever you find me, just come to me and we'll have a good chat about it, right? About your college life, about my college life. There's some about the secret that I can share at that moment in time. Okay, Madhushree, I'm way better, beta. Of course. Thank you so much for asking, Madhushree. Now I'm really better. Who was this for? Okay, Neelam Patel, my year at 523. Congratulations, beta. It's a lovely rank. Agamdeep Singh, this is not the platform for you to ask about the suggestions from him. You can ask it afterward, that's not a problem. Okay, sir, मेरा ये टॉपिक मिस हो गया था ऑफलाइन क्लास. ओके परफेक्ट, ठीक है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मजे में कर सकते हो. दिस इज द बेस्ट एडवांटेज दैट पीपल कैन एक्चुअली हैव फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म ऑफ लाइव क्लासेस ऑफ there's YouTube itself, right? It's easily accessible for everyone. So Pradeep Kumar ji, hi. एक बार जरा chats जरा ऊपर scroll करिएगा. There was a one kid who got 4009 rank. Okay, Souvik, congratulations, buddy. 4009, lovely. Okay, thank you so much. Shakti, please try to teach in English. I'll try to do that. And Neelam, once again, many congratulations. 523 is a pretty handsome rank. You must have worked really hard, and I'm so proud of you. I'm so proud of you, all of you. I'm proud of every one of you. All right, okay, I think there are a few more charts which so let's quickly scroll down there. Okay, all right. चलो शुरू करते हैं. You don't have to be sorry, beta. Agamdeep, you don't have to be sorry. It is that you can catch Mr. AJ at some point of time. You can talk to him and take some tips, right? But ultimately, believe me, what the idea is that you are the one who's gonna do it, right? So you have to do it. Okay, so I'm going for ISI. Akash, very lovely. Congratulations. Which one? ISI Kolkata or any other one? If I'm not mistaken, there are like a couple of ISIs are also there. Okay, शुरू करते हैं सेशन अपना. बच्चों जिनको the kids who are preparing for 2023, good wishes. All right, let's quickly see how we can. Okay, ISI Bangalore. Very nice. Okay, very nice. Okay, so शुरू करते हैं, ठीक है, फटाफट चलो. Hello. Let's see. Now, YouTube platform, we are into the third session, okay, L3 for quadratic, right? This happens on every Monday and every Friday at 2 o'clock. I see you folks, and we talk about some important concepts, some good quality questions. Today also we have got a lot of questions. Believe me, there are a lot of questions. I'll be a little like this, so there are a lot of questions, so you have to stay for a longer period of time and make sure that you are learning a lot from here only. Okay, all right, Zakaria. चलो शुरू करते हैं भाई, ठीक है, बढ़ा जाए आगे. So you give another thank you so much, Akash. The point is that if your learning of is not energetic, right? If it is not into high momentum, the chances are very high that you might forget the concept, and that's why I just keep it more interactive and more easy going for you, and people can easily have a connect. Okay, yes, Rishabh. Okay, so as you know the drill, the people who haven't downloaded the app, please quickly go to the app, and for every round, so every time I say that, right, you have to, like, if you downloaded it, or rather this is particularly for our channel, share, subscribe,
like, okay, and ultimately, particularly press the bell icon also, because you have to get all the latest notifications as well. Okay, through YouTube you will cover all the topics, sir. Yes, Shakti, I will be covering all the topics. मैं सारे के सारे topic cover करूँगा, Shakti. Okay, it may happen that if you want to study them quite in depth, then you can also parallelly refer our Excel and the AIM programs. All right, they are really nice ones. मिथुन मुखर्जी, hello guys. Okay, चलो शुरू करते हैं. Now, nth is the examination. This for the kids who want to join the Byju's platform, right? If you really enjoy it, and there are a lot of kids you've seen that like they have been really successful just because of our 2 years online program only. Now, this is again a very like a pretty handsome deal for the folks who want to go for our dedicated courses, which are actually the repeaters batch or 12 batch, right? So you'll get that 50% scholarship. You can register for free. You can quickly study and just see how the things are working. So there are scholarship tests also, and so it's a 1 year quick course that we'll be doing it, and every student who has who has qualified for the class 12th, rather who has already cleared the class 12th, they are the one who's got it. Okay, so I got AIR Naveen Kumari 3000 in advance. Can I get electrical? Not this kind of discussion here. We will be doing a session soon on about related to the this counseling and all. Okay, so there, Naveen, you can ask this question. We would love to answer that. Okay, I must have been earlier. Huge respect. JEE is fun actually with Byju's. Oh, wow, thank you so much. Yesterday I have given an all-India series. Okay, I don't know what was that. Thank you for responding in English, sir. Shakti, don't worry. Language has never been a barrier. Okay, it has never been a barrier. It will never be at my end. मैं हिंदी में भी बात करूँगा, मैं English में भी बात करूँगा. I know a couple of more languages also, but I'll be moving only in these 2 languages because most of the folks in India can follow these 2. Okay. Though I know a little bit of, so I know enough Telugu and enough Marathi also, but let's quickly figure it out. अब मुझसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो आकाश का ऐप 14 days का फ्री एक्सेस है, जो पहली बार प्लेटफॉर्म पे आए. इफ़ यू वांट टू एक्सेस आवर कंटेंट, यू वांट टू सी दैट हाउ इट इज़ एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग आउट टू बी. मुझे लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा हूँ अभी, मुझे थोड़ा छोटा होना पड़ेगा यहाँ पर, है ना? ओके, इसका मैजिक हो जाता है. I have that Wingardium Leviosa. No, maybe that one's for flying. I should not get into that. Okay, so to understand the concept, please explain in English medium. I'll try my level best, beta. Don't worry, okay? Now, it's a remainder theorem, which is a very simple concept, and we'll try to apply as much as we can. So, I request Newton's formula for sum of roots. Explain कर दीजिए. कहीं ठीक से मिल नहीं रहा. ठीक है, मैं कर दूँगा कुछ बाद में. Let's see. So, we say that अगर एक, let's say if I have a polynomial px, you divide it by a linear expression x minus alpha, then the remainder will become p of alpha. Okay, this is what the remainder. This is something that has been taught to you in class 8th or 9th, if I'm not mistaken. Okay, M. Shreya, yes, beta, thank you so much. I'm very well now. That day I was really not well, but today I'm really fresh and energetic and highly super duper happy because they have been code like Neelam told me she has gotten 523 rank, and then AJ, he got 3561 rank, and then again I have another kid also who's got like 4009 rank. I'm so super duper happy for these folks. Super happy, and in fact Akash is going for ISI Bangalore. That's a good thing. Okay, but I'm planning to drop a year for better rank. Is it a good choice or not? Naveen, it's totally up to you. Naveen, I will not comment particularly this question on this. You just have to decide whether you really want to do it or not. If you feel that, Naveen, particularly मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, Naveen, if you feel that you haven't given your best, you haven't given your, you haven't, maybe your actual potential has not been reflected. There could be a lot of reasons, right? Your health was not good for some time, you could not revise well, whatever may be the reasons, okay? If you feel in that way, then you must repeat. If you feel that, no, you have worked very hard, you have done everything possible that you can, now there is no chances of improvement in myself, I don't think there's a drop is required, okay? So it's totally up to you. Yeah, yes, yeah, I'm happy, I'm totally good. So P alpha 0, that means that x minus alpha becomes a factor. Now let me come back to this question. This question is a very popular type of question with JEE mains, okay? And in most of the competition, you'll find this question. The chances are very high you might get this. Let Px equal to 0 is a polynomial equation. If Px is divided by x, x plus 1, x minus 1. So basically, I'm talking about x, x plus 1, x minus 1. If I multiply all this, I'll be getting the this polynomial as x cubed minus x, okay? What is the degree of this? So degree of the polynomial is what? Degree is 3. These are the 3 factors that I'm actually dividing, right? This is my divisor. So the degree of the divisor is 3, right? What is the degree of the divisor? 3.
So the degree of the divisor is 3, then the degree of the remainder will become what? So we'll say that degree of remainder will always be equal to degree of divisor minus 1. Right? Let's say if I am dividing by a quadratic, then my remainder has to be linear or lesser than that, right? Okay, so 1 degree lesser. Otherwise, the division is still possible. You know the deal better than me. So now let's quickly see that. When I divide it by x, we get the remainder as 1. When I divide it by x plus 1, we get the remainder as 1. When we divide it by x minus 1, we get the remainder as 3. They say that if Rx is the remainder, when you divide this polynomial by x cube minus x, then tell me what of the options are correct. So I have to figure out Rx. They're asking about the question about Rx only. See, if the degree for divisor is 3, then the degree for my remainder will become what? 2. So basically, remainder is of what? Quadratic. So I can for sure say that remainder is what? Remainder is definitely a quadratic. Now when the remainder is a quadratic, they are saying that Rx equal to 0 has real root, distinct root, imaginary root, minimum value of Rx and all. Let's quickly reach to the expression for Rx first of all, and then we'll talk about it. Since I'm dividing it, so let's quickly assume that my Rx, the remainder, is actually in the format of what? In fact, let me put it up in this way. So we'll say that my polynomial Px is equal to x cube minus x times of some quotient cox plus Rx, which is what? My remainder. Okay, they have used the small letter r, let me use the small letter r only. Is that okay? Just because they have used it, that's why I'm using it. Now, if I'll put x equal to 1, right? Sorry, x is, so the factors are what? X plus 1, x minus 1. So when I put x equal to 0, P0 is given to me as 1. This implies when you put x equal to 0, I'll be getting my r of 0 equal to 1. Okay, this is the first condition that I'm getting. Now, as I said that Rx is of quadratic, can I assume it to be as ax square plus bx plus c? Of course I can. Since I know that my remainder is of the degree 2 or second degree, so it has to be a quadratic, so I can assume my remainder polynomial as ax square plus bx plus c, and the moment when I use it, by putting x equal to 0, I'm getting remainder as 1. So r0 is 1. Perfect. When I put x equal to 0 here, I'll be getting a into 0, b into 0, c into 1 is equal to 1. So I got c equal to 1. Lovely. I got c equal to 1. Perfect. When I put x equal to minus 1, so in fact they have already told me that the r of minus 1 is equal to 1. And they have also told me that r of 1 is equal to 3. You see that remainders right here, right? So when x equal to 1, when you put x equal to 1, the remainder is what? 3. Okay, so when r of minus 1 equal to 1, that is a minus b plus c equal to 1, but c is already 1, right? If c is already 1, this c will get cancelled with this. I'll be getting a minus b equal to 0 or simply a equal to b. Is that okay? So I got this as a equal to b. Nice. Okay, now if r of 1 equal to 3, that is a plus b plus c equal to 3. Alright, now a equal to b, c is already 1, which implies what? We get a equal to b equal to c equal to 1. All the three are equal to 1. My expression for remainder will become actually x square plus x plus 1. What a lovely remainder, isn't it? So simple, so very, very quick calculation. Is that okay? Alright, public, I think the chart has frozen or something. I'm not able to see or I'm not able to read anything. Folks, quickly see what is happening here. Am I, okay, I think there are some pop-ups, some of the folks are there. Okay, alright, let's see. So remainder has finally become as nothing but x square plus x plus 1. Okay. Now let's quickly go for the option. So option was saying that this equation has distinct root, imaginary roots, or what? Clearly for this quadratic, discriminant is less than 0, so it's definitely going to be having what? Imaginary roots. Right, okay. At the same time, if I want to go for the minimum value of it, so you know the drill, right? X square plus x plus 1, d less than 0, vertex at minus half, x coordinate minus half, this point is y, and when you take up the minimum value, it will be minus d by 4a, right? So minimum value for this Rx minimum will become equal to minus d by 4a. That will be nothing but minus of 1 minus 4 upon 4, right? Which is nothing but equal to 3 by 4. Perfect, which says that my option B and C are the correct answer. Very, very simple question. Very popular question. So I'm sure that everyone must be now comfortable. Now onwards will be comfortable in such problems. Alright, sure. Perfect. Okay. Moving ahead. Moving on to the next question. All set? Sure? Chalo. Let's go. Graph of a quadratic polynomial. So, क्या चाहिए तुमको ग्राफ बनाने के लिए? ग्राफ बनाने के लिए you just need only 3 information. Just 3 information. You just need only 3 information. And what are those 3 information? They talk about coefficient of x square. So, I'm talking about these quadratic.
ax square plus bx plus c. In fact, y equal to ax square plus bx plus c. So you need the sign of a. What is sign of a? Coefficient of x square, whether it is positive or negative. Alright. Okay, so this is what we were talking about, sign of a. Now, apart from that, we need the vertex, which is actually minus b by 2a comma minus d by 4a. And the point on the y-axis, which is actually 0 comma c. You just need these three information. The moment you have all this, you can instantly plot any graph. The graph for any quadratic. You can plot any graph. Alright. Okay, chalo. तो मैं उसी इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से लिख के दे देता हूँ. So I'm just erasing all this information. देखो, step by step. So I know that the graph of a quadratic is always a parabola, right? Perfect. Okay. Now, sign of the leading coefficient, which is actually x square. So coefficient of x square is what? A. So I'm talking about sign of a. When a positive, it's an opening upwards. When a negative, it's opening downwards. Perfect. Okay. Secondly, so this is for opening upwards parabola. This is for opening downwards parabola. All right. Sure. Now let's go for coordinate of the vertex. Vertex is what? This bottommost point. Here bottommost and here this topmost point. So depending upon whether I have opening upward parabola or I have downward parabola, I'll have the vertex. So vertex is the particular point where the curve actually changes its direction, if you can say that, or its trend of increasing or decreasing format. So coordinate of the vertex, which is actually minus b by 2a minus d by 4a, right? I have marked it into the diagram now. I hope it's pretty clear. Okay, so that's why I'm keeping it very clear. Okay, how can we use this graph? Minus b by 2a, yes, okay. How can we use this graph where derivative is 0? No, derivative is 0. It's a random graph. It's a random graph. See, when d will be 0, then y coordinate will become what? 0. And the y coordinate will become 0. The point will come where? X-axis. If the point is lying on the x-axis, it will surely be touching. ठीक है? अभी clear हो गया? विवेक सिंह जी? Perfect. Okay. Now, vertex of the parabola. These are the just three information that I'm talking about. If you have these information, you are done. Okay. Hey, buddy, you came here. All right. Hello. All right. Did you write the examination, hey, buddy? Or you are preparing for 23? I'm not really sure because many of my kids have just told me about their ranks. I'm super duper happy to hear about it. So in case if you have also cleared, let me know. Okay, so y-intercept is what? When you put x equal, see, if you want to have the point on the y-axis, you just need to put x equal to 0. So the moment when you put x equal to 0 into the quadratic, it will give you the point as 0 comma c. Right, okay, perfect. J23, fresher, perfect, very good, very good. Buddy, just prepare well, prepare well. चलो भाई आगे चलते हैं. ये बड़ी तुम्हारा नाम क्या था यार? मानस था या क्या था? जो भी नाम था नाम लिखो अपना. Okay, so these are the three information that you require in order to plot any graph. ठीक है, Shakti, you are able to follow? Perfect. Okay. Everyone else whosoever is having some language issues or something, कृपया बता दीजिए मुझे. Please inform me if you are having something. Yes, Mr. Shore. I'll remember your name now. In the given figure, vertices of triangle ABC lies on this y equal to fx equal to x square plus bx plus c. Triangle ABC is isosceles right angle triangle with hypotenuse 8. If this AC is 8, this is going to be 4, this is going to be 4. If hypotenuse is 8, so this is 4, it's an isosceles right angle triangle. So these angles are 45, 45. This is also 90. So this will also become what? 4 only, right? Perfect. Now what do you need? See, it's a simple thing. Area of the triangle ABC, that's the simplest one, right? Half, base is 8, height is 4, you get this as 16. Wow, lovely. D option correct answer. Very nice. Number of integral values of x lying between the roots of fx equal to 0 and are 7. See, this length is 4, then the first root is at x equal to 4, and if this length is also 4, then the next root at a is actually minus 4 comma 0. So first root is 4, other root beta is actually minus 4. And what are the integral values between them? So minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, total 7. Perfect. C option is also correct answer. Now I have to figure out the equation of the parabola in order to solve the option A and B. Is that okay? Okay, चलो. Okay, Vivek Singh ji ABD बोल रहे हैं. अभी हम लोग देख लेते हैं ठीक से. Now tell me one thing. If this length is 4, what this bottommost point coordinate for this B will become 0, minus 4. So what will be the minimum value for this quadratic? See, that's for the minimum value, right? The y minimum here, or for this particular quadratic, will become nothing but equal to minus 4. That is also pretty evident. Sure. Okay. All right. Now,
We know that one root is at x equal to 4, other is at x equal to minus 4. So I can say that my quadratic y equal to fx can be written as nothing but x plus 4 into x minus 4 with some coefficient of x square that I'm not sure of. So how will we come to know? You can find it out by checking the value at x equal to 0. So when I put x equal to 0, so we know that f of 0 is given to me as minus 4. Can you see that bottommost point B? What's this, right? For the point B, you just need to put x equal to 0. That's a point on y-axis. For y-axis, you have to put x equal to 0. So if 0 equal to minus 4, that means minus 4 is equal to, in fact, this will become x square minus 16. If I put it up in that way, this is actually a times of x square minus 16, right? Okay, alright. So when you put x equal to minus 4, this will become actually nothing but what? 60 minus 60 is 0 only. Yeah, that's what we are getting actually. Okay, and this length is 4 unit only, right? ठीक है. तो अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में जजमेंट लेना है. दैट आई हैव टू रियली इंश्योर कि वो वैल्यू पर्टिकुलरली बन के क्या आ रही है. मेरा सी अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 बनाता हूँ सिर्फ, सो इट विल गो एट व्हाट वैल्यू माइनस 16, बट इट्स गोइंग टिल व्हाट माइनस 4. मतलब क्या हो रहा है? मतलब ये हो रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, बेसिकली जो y है दैट इज 1/4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16. वाई? बिकॉज y मिनिमम at x equal to 0, which is actually this f of 0 is minus 4. So y minimum is minus 4, right? If you put only x square minus 16, minimum value will turn out to be minus 16. But I want it to be minus 4, so you have to divide by 4. So that's how you will be generating it. Sir, theory में कुछ करवा दीजिए. Theory तो कर रहे हैं बेटा, और क्या कर रहे हैं हनुराज कुशवाहा जी? आपने शायद सेशन शुरुआत से ज्वाइन नहीं किया है. सर थ्योरी भी कुछ करवा दीजिए प्लीज. सर बेटा थ्योरी तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं बालक? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखो यही किया था. ये देखो ये थ्योरी तो है, और क्या है, जहाँ पे मैं बता रहा था कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं. 3 इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं हम लोग, है ना. पहली इन्फॉर्मेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दूसरी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, और 0,c. ये 3 इन्फॉर्मेशन आपके पास है. आप दुनिया का कोई भी ग्राफ बना सकते हैं. ठीक है, ऑल राइट. तो मेरे पास क्वाड्रेटिक y वाला बन करके आ गया. यू डोंट हैव टू बी सॉरी, यू जस्ट हैव टू बी अवेयर ऑफ इट. डोंट से सॉरी. कोई सॉरी वॉरी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा नॉलेज चाहिए और तुम्हारा लर्निंग चाहिए. ठीक है, ओके ऑलराइट. वो बोल रहा है, उसने बोला क्या प्रभु, सब लोग डिसाइड कर लो आपस में क्या करना है. अच्छा चलिए, तो मेरा क्वाड्रेटिक बन के आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 4. Clearly, y minimum was also minus 4 when I see the option. Oh, bingo. A, B, C, D, all 4 correct options. Sure, sort it out. Perfect. Okay. Vivek Singh ji कह रहे हैं सर थ्योरी कटवा दीजिए. So I'm not in favor of removing the theory. The reason being, it's a full length course, right? I do understand you are a repeater, right? And you might have studied a lot of concepts earlier as well. But I want you to be quick. Right, so it's a quick brush up is required at my end. In case if you have any confusion at any part of it, do let me know. I'll make sure that it is definitely there with you. Okay, so while doing the theory, if anything is missing at your end, please do ask. आगे चलते हैं हम लोग. Again, the part of theory. So now nature of quadratic equation. See, as I told you, when coefficient of x square is greater than 0. See, ये notes आपके पास हमेशा रहेंगे. आपको सेशन के बाद हम notes भी देंगे, पर आप चाहें तो you can keep it with you. So in fact, the entire session is with you on YouTube always. You can prepare your notes accordingly. Case 1, a greater than 0, we got an upward parabola. Perfect. Roots are alpha, beta. Okay. This is for d greater than 0. When we have 2 real and distinct roots. So there will be 2 intersection on the x-axis. है ना? भाई हम क्यों बोलते हैं x-axis पे? क्योंकि at x-axis, y will be 0. What is my y? Quadratic will be 0. So I'll say that at x-axis, ax square plus bx plus c will become 0. और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कहाँ जीरो हो रहा है? अल्फा और बीटा पे. मतलब एक्स इक्वल टू अल्फा भी इसको जीरो बनाएगा, एक्स इक्वल टू बीटा भी इसको जीरो बनाएगा, विच मीन्स एक्स इक्वल टू अल्फा एंड एक्स इक्वल टू बीटा बोथ आर दिस रूट्स. सो द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पैराबोला और द क्वाड्रेटिक cuts the x-axis is defined as the roots of that quadratic equation. All right. Okay. So this was for d greater than 0. Somebody was asking, sir, is it for d greater than 0, d less than 0, whatever. So I hope now it's more clear to you. For d equal to 0, see, we got equal roots, and for d less than 0, there is no intersection. There's a lot of information also which I have mentioned. I hope it's not gonna hamper anything. हटा देता हूँ. Okay, sorted out. Sure, perfect. चलो आगे बढ़ते हैं. तो रूट हो गया रियल डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, और यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स. ठीक है. अच्छा अब देखो अब क्या आया केस 2 में, जब a लेस देन 0 आ गया.
डाउनवर्ड पैराबोला केसेस अभी भी वैसे ही रहेंगे बेटा. When d greater than 0 you'll have real and distinct root. For d equal to 0 it will touch the x-axis. For d less than 0 it will not touch the x-axis. In fact, in the last case the graph will be completely below the x-axis. Okay, so that is the case when a is negative. So this is the case, this is a very popular one, right? When a negative, d negative, you want both of them to occur together, so intersection of those two. This is a equal to 0, sorry, d equal to 0 and a negative. This is what the intersection here. And for this case, d greater than 0, a less than 0, you take the intersection of both of them. Why am I writing this intersection? ताकि तुमको पता रहे, तुमको याद रहे कि intersection मतलब common निकालना है ना? तो both the conditions should hold true at the same time. That's exactly what you have to keep it or register it into your brain. When the conditions are there, you are supposed to apply the intersection only, okay? Is the D discriminant? Yes, of course, Mr. Mishang Zan. Lovely name. What does that mean, Mishang? Okay, so this is definitely discriminant. Discriminant, no बोलते थे ना हम लोग b square minus 4ac. ये बोलते थे ना? चलो, आगे बढ़ा जाए. Okay, फिर क्या हो रहा है? Points to remember. अब देखो क्विक इन्फॉर्मेशन है जो मैं चाहता हूँ कि आप सबके सब याद रखें. If a equal to 0, it will be straight line since the x square term disappears. Yes. तो पर हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं इसलिए मैं a को 0 नहीं बनाऊंगा. ठीक है? हेलो हाय नाम तो रख लेता अपना कुछ. Okay. Quick recap. First point, the expression ax square plus bx plus c will be at same sign for all real values of x if d less than 0. है ना? भाई या तो ओपनिंग अपवर्ड्स होगा या ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा, तो या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा. सो फॉर दिस केस व्हाट इज y? फॉर द फर्स्ट ग्राफ y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. फॉर सेकंड ग्राफ y इज ऑलवेज लेस देन 0. राइट? ओके, ऑलराइट. एक क्वेश्चन आ जाएगा बालक. अगली इंफॉर्मेशन क्या है? देखो, द क्लॉक इज टिकिंग. This expression will be always positive if d greater less than 0 and a greater than 0. Fair enough. You remember this graph? This is the graph that I'm talking about. In fact, मैं पीछे वाले में बना देता हूँ. इसका ग्राफ ये वाला है. ठीक है, ये आपका x एक्सिस है. y एक्सिस कहीं भी बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ग्राफ ऐसा बनेगा. खत्म. This is the case when a greater than 0 and d less than 0. ठीक है? Sure? अगले इन्फॉर्मेशन में चले. d greater than 0 साइन ऑफ एक्सप्रेशन विल बी बिटवीन द रूट्स विल बी ऑपोजिट टू दैट ऑफ a. मतलब क्या हो रहा है? देखो, सी ये मेरा रूट है, मान लो अल्फा और बीटा, और दिस केस इज फॉर a greater than 0 and this is the graph for y equal to x square plus bx plus c. Can you see that? जब x आपका अल्फा से बीटा के बीच में है, when I'm choosing an x values between alpha and beta, what is happening here? When I'm choosing x between alpha and beta, clearly the y coordinate is what? Negative. That's what it says. Sign of the expression between the roots will be opposite to that of a. ए का साइन क्या था? पॉजिटिव. तो वाई का साइन क्या हो गया? नेगेटिव. कहां पर? रूट्स के बीच में. ठीक है, चलो अगली इंफॉर्मेशन. ए ग्रेटर देन 0 अगर ओपनिंग अपवर्ड्स ग्राफ हुआ तो मिनिमम तो बेटा एक्स वर्टेक्स पर ही लाया करेगा ना. सो व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट फॉर दिस वन? दिस एक्चुअली वाई कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट माइनस डी बाई 4a एंड व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट? माइनस b बाई 2a. है ना? ओके, लास्ट इंफॉर्मेशन. If a less than 0, then the maxima will occur at this. See, अगर ग्राफ तुम्हारा ओपनिंग अपवर्ड्स हो गया, सॉरी ओपनिंग डाउनवर्ड्स हो गया, इस टाइप का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस से मान लीजिए, तो ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ना. ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, जैसे कोई ब्रशअप है. चलिए आखिरी इन्फॉर्मेशन. मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द जी एक्स इज गिवन बाय माइनस डी बाई 4a डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू. ठीक है, अगर ओपनिंग अपवर्ड्स हुआ तो माइनस डी बाई 4a मिनिमम होगा, अगर ओपनिंग डाउनवर्ड्स हुआ तो माइनस डी बाई 4a मैक्सिमम वैल्यू होगा. दोनों केस में that minus d by 4a is the value which will assign the maximum minimum depending upon the graph. बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई. बच्चे बैठे हुए हैं, सवाल का इंतजार कर रहे हैं. Let's start the problem. चलो. The graph of the quadratic polynomial y equal to px square plus qx plus r has its vertex at 4, minus 5. सिर्फ ग्राफ बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन है ये पूरी तरह से. ठीक है, फटाफट आंसर देना. पी क्यू आर का साइन पूछ रहा है और पी और क्यू में रिलेशन पूछ रहा है. तो बोल रहा है कि इस ग्राफ का जो वर्टेक्स है दैट इज एट 4, minus 5 एंड एक्स इंटरसेप्ट एज अनदर वन इज नेगेटिव. एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ? बेसिकली जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मतलब कुछ इस टाइप का ग्राफ है. रैंडम बना रहा हूँ. ठीक है, दिस इज सम अल्फा, दिस इज सम बीटा. दैट्स व्हाट माय क्वाड्रेटिक इज, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. इज दैट क्लियर? नाउ सिंस द वर्टेक्स इज एट 4, सो आई कैन से दैट फ्रॉम द क्वाड्रेटिक y equal to px square plus qx plus r, I'll say that my vertex, which will be actually minus q by 2p, is given to me as 4, which implies q is equal to minus 8p. Okay.
ऑलराइट, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर आपको कैसे पता चला कि जो इसके रूट्स हैं वो ओपनिंग अपवर्ड्स हैं, सॉरी पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स है। देखो उसने वर्टेक्स दिया है 4,-5 में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा ना बेटा वर्टेक्स। अब अगर ग्राफ अगर वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है, लेट्स से दिस इज 4,-5, एंड इफ यू आर मेकिंग अ डाउनवर्ड पैराबोला इट विल ऑलवेज बी d लेस देन 0, है ना, इधर लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, d लेस देन 0। तो अगर ये d लेस देन 0 बन जाएगा मतलब क्या होगा, यहाँ पर तो कोई तुम्हारा रूट ही नहीं आएगा, पर यहाँ तो क्लियरली बोल रहा है एक रूट पॉजिटिव है एक रूट निगेटिव है, मतलब हर हालत में p क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं आगे। तो मुझे क्या मिला अभी तक, p ग्रेटर देन 0 मिल गया, मुझे दूसरा रिलेशन मिला q इज इक्वल टू -8p विच इम्प्लाइज p, q कैसा हो जाएगा, q नेगेटिव हो जाएगा। भाई p पॉजिटिव हो गया तो q नेगेटिव ही होना होगा ना। अच्छा अब वो बोल रहा है कि दोनों रूट जो है तुम्हारे वो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। अगर क्वाड्रेटिक ये है आपका px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, लेट्स से द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा विल बी गिवन बाय r बाय p। बट सिंस वन रूट इज पॉजिटिव, मैंने अपने ग्राफ में अल्फा को नेगेटिव और बीटा को पॉजिटिव मान लिया है, तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, दैट इज r बाय p इज व्हाट, नेगेटिव। पर इस रेशियो में डिनोमिनेटर कैसा है, पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, रेशियो नेगेटिव है, मतलब न्यूमरेटर को हर हालत में क्या होना होगा, r has to be a negative value. That's exactly what I was talking about. p greater than 0, r negative, q negative, और ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि q कितना आया था -8p, ठीक है। और इनफैक्ट क्या आया था मेरा रिलेशन यहाँ से, हाँ q इज इक्वल टू -8p। तो आंसर्स में इट्स ओनली a b c करेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया रोशन जी, शाबाश। ओके चले आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा रेंज में, उसके बाद फिर रेंज की क्वेश्चन कराता हूँ। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हुआ ना, पिक्चर बहुत आसान थी। चलो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक की रेंज की बात करते हैं हम लोग डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा x कितना रिस्ट्रिक्टेड है ना, मतलब x की वैल्यू कितनी रिस्ट्रिक्टेड है उसके हिसाब से। ओके सो केस 1 में a ग्रेटर देन 0। अच्छा तो a ग्रेटर देन 0 में देखो अगर ऐसा ग्राफ है मेरे पास में, तो रेंज देखो बेटा, वर्टेक्स कहाँ होगा, -d/4, y कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ वर्टेक्स का, राइट, दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। इसको मैं नाम लिख सकता हूँ, मैं अगर कहीं x वर्टेक्स लिख रहा हूँ मतलब -b/2a की बात कर रहा हूँ, कहीं भी अगर मैं y वर्टेक्स लिख रहा हूँ, y और नीचे यहाँ पर सफिक्स में अगर मैं लिख रहा हूँ इधर वर्टेक्स, मतलब मैं y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ। तो मेरे कोऑर्डिनेट ये बन के आ गया -b/2a -d/4a, और अगर x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पूरा का पूरा ग्राफ ले सकता है कहीं से कहीं तक, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -d/4a। मैक्सिमम क्या हो जाएगी, ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा, ऊपर चलता चला जाएगा और ऐसे स्क्रीन को पार करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप समझ रहे हैं वो पॉइंट जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ। लेट्स क्विकली सी फिर आगे क्या बनेगा। तो इसके हिसाब से अगर x रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अगर x एक्सिस रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, x की वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, -d/4a एट x इक्वल टू -b/2a। रेंज क्या बन जाएगी इस केस में, सो इफ x इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, राइट, then range will actually become nothing but close interval -d/4a से infinity तक, if x can take any real value, if x belongs to all real numbers। if पूरा x axis allowed है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक बात है। तो ये हो गया y minimum to infinity, that is -d/4a से infinity, closed at -d/4a। ओके आर्यन भदौरिया जी 76,000 जनरल रैंक, आई एम नॉट श्योर, मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जो हमारा काउंसलिंग वाला सेशन हम लोग जल्दी करने वाले हैं यूट्यूब पे भी, बहुत जल्द आएगा वो, सो विल मेक श्योर दैट वी आर एड्रेसिंग दीज क्वेश्चंस हियर। आई वुड लव टू एड्रेस इट बट नॉट हियर, राइट, आई हैव अ रिस्ट्रिक्टेड टाइम, अ वेरी लिमिटेड टाइम, बिकॉज दीज किड्स आल्सो हैव टू जंप टू अदर सेशन आल्सो। Now second case a negative, so when a negative, clearly the topmost value will become what, -d/4a। so again when x is not restricted, x can take any real value, the y value will become what, will it will minimum value कितना होगा, -infinity जाएगा ना बेटा, तो this will be the range -infinity से -d/4a closed at -d/4a। अच्छा चलिए, तो ये तो हो गया मेरे क्वाड्रेटिक ओपनिंग आउट से ओपनिंग डाउनवर्ड्स में जब x रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अब अंडर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे जा रहा हूं मैं, जब x पे कुछ वैल्यू बोल रहा है कि x को x1 से x2 के बीच में बात करो, ठीक है। प्रेरणा अगर इतना थैंक यू सर बाय दिस टीम देयर विल बी काउंटलेस। ओके प्रेरणा आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ इट, मुझे अवेयर नहीं है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द टाइमलाइंस एंड द डे व्हेन इट इज हैपनिंग, तो मुझे वो एग्जैक्टली नहीं मालूम है। और कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ वंडरफुल रिजल्ट, योर हार्ड वर्क इज रियली पेड ऑफ, इट्स अ डिसेंट रैंक, गेटिंग इनटू आईटी इज ऑलवेज अ गुड थिंग। ओके
आर्यन, मैं इस सब पे कुछ अभी और डिस्कशन नहीं करूंगा। तो प्रेरणा, वंस अगेन मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस, और मैं इंश्योर करता हूं कि इस सेशन के तुरंत बाद टीम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेगी हमारे चैनल पे। नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस करो, तो यू विल बी इमीडिएटली कमिंग टू नो कि क्या होने वाला है या कब होने वाला है काउंसलिंग से रिलेटेड सेशन, ठीक है। वंस अगेन कंग्रेचुलेशन, ये एंजॉय, इस टाइम को बहुत एंजॉय करो, थोड़ा स्टार्डम जैसा फील होता है, और मैंने तो बहुत गजब एंजॉय किया था इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्टेड डोमेन में इस केस में हमेशा सजेस्टेड यही कहते हैं कि आप ग्राफ की हेल्प ले लो, बड़ा आसान होता है। मतलब फॉर्मूले बनाने को मैं बहुत सारे मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन की फॉर्मूले बना सकता हूँ, बड़ी सारी कहानी सुना सकता हूँ, पर मैं अभी भी यही बोलूंगा, छोटू सा रफ आइडिया बनाओ। देखो, ग्राफ बनाना सबसे आसान है दुनिया में, है कि नहीं है? बड़ा आसान है ग्राफ बनाना। क्या करते हैं भाई, 3 चीजें चाहिए, साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए का साइन देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव, देन coordinates of vertex which is actually minus b by 2a minus d by 4a and 0 comma c, है ना? Once you have graph, you can quickly just tentatively mark it and then you can plot it. Believe me, that's gonna just save the quickest time. Let me show you by one example. If y equal to fx equal to t square, इसको f of t होना चाहिए था भाई यहाँ पर. So y equal to f of t equal to t square minus 2t minus 3, then the range of f for the given amount of t belongs to minus 2 to 0. अब देखो हो क्या रहा है, रेंज पूछ रहा है पर रिस्ट्रिक्टेड है टी की वैल्यूज में। तो अब क्या करो, खड़ा कर ग्राफ बनाओ। तो मुझे मिला टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3, ये मेरा y था। ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि टी स्क्वायर कोफिशिएंट कैसा है, टी स्क्वायर कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। ओके, वर्टेक्स निकाल लेते हैं इसके बाद। तो पहले अपवर्ड आ गया, ये सबसे अच्छी बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स इज व्हाट, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a कंपेयर करने में मिल जाएगा तुमको माइनस ऑफ माइनस 2 विच इज एक्चुअली 2, 2 बाई 2 एक्चुअली 2, दिस इज इक्वल टू 1। तो y कोऑर्डिनेट इज 1, सॉरी x कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये आपका माइनस बी बाई 2a, ये x वर्टेक्स हो गया। और जब मैं y वर्टेक्स की बात करूंगा तो y वर्टेक्स बनेगा माइनस d बाई 4a, दैट विल बिकम एक्चुअली नथिंग बट माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज एक्चुअली प्लस 12 अपॉन 4a माइनस d बाई 4a, दैट 16 बाई 4 और सिंपली माइनस 4। तो वर्टेक्स क्या आ गया, 1 कॉमा माइनस 4। सो आई गॉट माई वर्टेक्स एज 1 कॉमा माइनस 4। ओके, एंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज व्हाट, 0 कॉमा माइनस 3। तब खड़ा कर ग्राफ बना लो। देखो क्या हो रहा है, पहले 1 कॉमा माइनस 4 ड्रॉ करो, तो ये आ गया तुम्हारा 1 कॉमा माइनस 4। यहाँ पर 0 कॉमा 3 पर माइनस 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ कहीं 0 कॉमा माइनस 3 होगा, ठीक है। और ये x का वैल्यू कितना है, 1। ये जब आप ग्राफ की बात करोगे तो आपका ग्राफ कुछ कुछ इस तरह से जाएगा। थोड़ा सा ऊपर मार्क कर देता हूँ इसको, समझिए, देखने में आसान होगा, मतलब समझने में आसान होगा इसलिए। अब वो क्या बोल रहा है, आपको सिर्फ -2 से 0 तक जाना है। तो देखो -2 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, 0 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, है ना। सिंपल क्वाड्रेटिक है। देखो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, तो इसका फैक्टर आ जाएगा आपका t + 1 × t - 3। रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे t = 3 एंड t = -1। एकदम चिंदी चिंदी से सवाल है। ओके, ऑलराइट। Sir, can you speak in English so that many of the students like me are watching the video from southern India, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, etc. So it may helpful for us. Okay, Shreya, Simon, don't worry about it. I don't think the language is going to be really a barrier. I'll make sure that while I'm explaining the concept, I'm using English particularly, right? And in fact, both the languages. दोनों ही भाषाओं का इस्तेमाल करता हूँ मैं। ठीक है, so I'll be using both the languages because a large part of India is also asking for Hindi. So a large part of India is also asking for English. Let's do both together. ठीक है, wherever you feel that Shreya, Simon, that I am more into towards Hindi, just quickly point me out over here in the chat. I'll appreciate that. I'll be quickly coming back to that language only. और हिंदी भाषी जनता, जो भी लोग हिंदी समझ सकते हैं, आराम से अपना रिलैक्स रहिए. We'll be covering both the languages. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी. ओके, ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं हम लोग फिर आगे. आप देखो क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ से वर्टेक्स आ गया मेरा और ये ग्राफ आ गया. अब देखो -2 से 0 के बीच में, तो 0 पर वैल्यू कितना आ गया था बेटा, -3. -2 पे वैल्यू कितना आएगा, तो यू जस्ट पुट x ये t = -2 हियर. जैसे ही -2 पुट करोगे इट विल बिकम 5 एक्चुअली. सो एट -2 द वैल्यू इज टर्निंग आउट टू बी 5. सो मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ. आई एम जस्ट यूजिंग द अनदर कलर. सो फ्रॉम -2 to 0, these are the x values. For this, the accepted graph will be this, and the range will go from this point, which is actually -3, y value. Y value is what here? -3 till 5 here. I repeat that x values are going from -2 to 0. So the graph accepted portion will be this, and the corresponding y values will be going from here to here. There are a lot of zigzag lines which I made here. I hope this is going to be, yes, of course, perfect. So my range is going to be -3 to 5, the closed interval, hence the B option becomes the correct answer. Lovely, Anand, lovely. Okay, Roshan, good, very good.
Shall we move on? आगे बढ़े? रोशन, आनंद, बाकी और Simon, will you like Shreyas, were you able to answer this or not? हाँ? Okay, चलो शुरू करते हैं. Alright, the values of p for which 4 to the power t minus p minus 4 to the power t plus 9p by 4 less than 0 for all t belongs to 1 to 2. This is a beautiful question. बड़ा अच्छा question है. और रैंकर्स बैच में या रिपीटर्स बैच में हम इस तरह के क्वेश्चंस को ही एंटरटेन करना ज़्यादा पसंद करते हैं. इनफैक्ट वी फील दैट गुड दैट ओके इस लेवल के क्वेश्चन भी बच्चे कर पा रहे हैं. एंड बिलीव मी ये कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है. इट्स जस्ट दैट कि आपकी बेसिक्स स्ट्रांग है. व्हेन यू हैव वेरी स्ट्रांग बेसिक्स यू कैन इजीली डू दैट. Let's talk about it. I got this 4 to the power t. This can be written as 2 square to the power. Let me change my color. First of all, okay, perfect. So this is 2 to the power 2 t minus p minus 4 into 2 to the power t plus 9p by 4 less than 0 for all t belonging to open interval 1 to 2. Okay, all right. Funny villager 0542. This is a question mark. What exactly you want to? What are you asking? Okay, so मैं इसको लिखता हूँ 2 to the power t the whole square minus of p minus 4 2 to the power t plus 9p by 4 less than 0. Alright, why this 0542 by the way? 0542, I think there's a code for Varanasi perhaps, right? Okay, the landline connections, if I talk in that way, maybe you are from Varanasi. Just a guess, random guess. So see, 2 to the power t is repeating itself. So let's do one thing. Let's quickly take this 2 to the power t as some y or something. So my quadratic will become y square minus of p minus 4 times of y plus 9p by 4 less than 0. But make sure that t is restricted from the open interval 1 to 2. So you have to ensure from that only. Okay. 12th का कब चलेगा? 12th का बेटा you should follow the channel. There are 3 series that we are running, which is actually the Excel and the AIM and this one. This is for repeaters. It's very at a fast pace and good quality questions. Okay, let's see how we can do it in that way. So एक बार देख लीजिए कि आपको क्या है, क्या थॉट है आपका. हाँ विवेक सिंह, हम इसको 2 power x को t डालेंगे. So let's quickly put 2 to the power t is equal to y, my quadratic, and since t is lying from 1 to 2, which implies that 2 to the power t will be lying from 2 to the power 1 to 2 to the power 2, which implies that 2 to the power t will lie from 2 to 4, which implies that y is restricted from open interval 2 to 4. So I have to make sure that this quadratic y square minus p minus 4 times of y plus 9p by 4 is less than 0 for 2 to 4. That's it. For open interval 2 to 4 it should be negative. सलमान रोशन जी बार बार एक ही चीज पूछे जा रहे हैं, क्या है भाई देख लेते हैं. सर गेटिंग 189 by 360 but got only 20 marks in maths. Can I top IIT CSE? Please tell. I am not sure. Maybe this is not the right platform to talk about it, Salman Roshan. We will be very soon running one counseling session and we will love to answer these questions. Believe me, this is a dedicated session for the counselings and all. Okay, don't worry about it. Yes, exactly. So since t goes from open interval 1 to 2, so my 2 to the power t will be going from 2 to 4. So y is from 2 to 4. Now I have to make sure that this quadratic is less than 0, right? Quadratic negative, that is the graph has to be below the x-axis. So I want that from 2 to 4, the graph should be below the x-axis. It could be like this, right? Or it could be like this. Anything is acceptable. This kind of graph, both the things are okay with me. Okay, alright. मुझे वैसे डुबा दिया पेपर में. स्वास्तिका, hoping for the best next time. Okay, all right. Okay, all right. स्वास्तिका, जो भी है जैसा भी डिसाइड करियो बेटा, just make sure that you are putting your best efforts now. That's it, okay? और कुछ मत सोचना. So as I said, we need to have the completely like negative graph. So the graph could be somewhat like this, or the graph could be like somewhat like this. Any possibility is there. So I have to ensure that this quadratic has to be negative from 2 to 4. For that, the values at 2 and 4 should be negative, both, right? They could be anything, like anything, but for sure negative. So I can say that the value, this f of 2 has to be less than 0. At the same time, f of 4 also has to be less than 0. Okay, okay. So what I'm going to do, I'm going to use this f of y as y square minus p minus 4 times of y plus 9p by 4. And these are what my conditions are. F of 2 less than 0, f of 4 less than 0. Is this sufficient? No. I tell you why. If I mark only this condition, there could be also a possibility of the graph
Something of this sort. See, f of 2 negative, sure. F of 4 negative, sure. Good, good. Both of them are occurring, and I want both of them to be negative at the same time. But both of them can even be negative with this graph also. Is it always negative? No. You see, from this portion, here to here, these x, from x1 to x2, the graph of the quadratic is above the x-axis. मतलब पूरा graph positive हो गया. So when the graph is above the x-axis, y value will become positive. मतलब क्या होने वाला है ना? y2 into y4 greater than 0. Maybe that is between them. नहीं बेटा, Vivek, there is a big blunder that you are making it. Let me help you out in that. So Vivek Singh is saying that sir y2 into y4 has to be greater than 0. वो तो तब भी हो सकता है ना बेटा, जब दोनों values ऊपर lie करें. See, y2, y4. If you put it up in that way. In fact, not y2, I'll say that f of 2 and f of 4. See, the condition still holds true. Both of them are positive, so the product will also be positive. Right? So you have to be a little careful. D less than 0, it's a crime. Why D less than 0? It can be D greater than 0, see? This. In fact, in this graph also, it can be this. It's a favorable graph. Why can't be D? D could also be greater than 0. ऐसा कोई restriction नहीं है. ठीक है? आनंद जी, D less than 0 कोई जरूरत नहीं है ऐसी. Okay? Alright. तो ये कंडीशन मैं हटा दूं. मैं चाहता हूं कि ग्राफ को या तो ऐसा हो या इस टाइप का ऐसा हो. It should be completely negative below the x-axis. That can happen when I apply both the condition this as well as I want that my x vertex has to be either lesser than 2 or x vertex has to be greater than 4. So there are a lot of conditions that I'm talking about. ठीक है, तो हमें 4 कंडीशन यहाँ पे लगानी होगी. एक तो वर्टेक्स मेरा बीच में नहीं लाई करना चाहिए, -2 से लेके 4 के बीच में, और f of 2, f of 4 दोनों को एक साथ नेगेटिव होना पड़ेगा, दोनों वैल्यूज को. प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं. प्रोडक्ट नेगेटिव तब भी हो सकता है when both the values are positive. Right? When both the values of f of 2 and f of 4 are positive, the product will still be positive. Right? So make sure. Minus d by 4 is negative. Yes, of course. That's exactly what I want. Okay? The vertex has to be negative. वो मुझे चाहिए. In fact, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो वर्टेक्स को completely negative बोलना गलत होगा. तो आप एक ग्राफ देखो, क्योंकि पूछ रहे हो इसलिए बता रहा हूँ, रैंकर्स बैच इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ. ग्राफ देखना ध्यान से, ठीक है? Just because people are asking, that's why I'm answering these questions. Let me take another color. येलो ही ले लेता हूँ. देखो क्या हो रहा है. आपने कहा कि some students saying sir minus d by 4 is negative. मतलब y coordinate of the vertex is negative. That's the condition that I have to put. Let me show you. I can have a graph of this sort where I have this, this 2, this here 4, and I want the graph to be completely negative. See this kind of graph. Both the values are negative here, right? Yes or no? है ना? पर देखो ग्राफ माइनस डी बाई 4 नेगेटिव है क्या? नहीं. बस ये मैं मानता हूं this value. So in general it's not a true statement, but for this question I know that the graph is only upwards. It's only upwards. So if the graph is only upwards, then minus d by 4a for sure in this case has to be negative. ये definitely accept होगा. So Roshan, you are right if you are talking particularly about this question. In general, this is may or may not be true. So be very careful. If you are not aware about the coefficient of highest degree term or x square or y square, then you have to take factor also into account. Roshan, is that clear? वो thought तुम्हें clear हो गया बेटा? तो वो part miss ना हो, ठीक है? अगर हमें सिर्फ negative दिखाना है, तो 2 से 4 तक के बीच में ग्राफ ऐसे नेगेटिव होकर के ऐसे भी चला जा सकता है, right? So that might happen in any other question, not here, but here this has to be done. D less than 0 along with leading coefficient negative. Leading coefficient तो negative है ही नहीं, वो तो positive है, वरना वो हमेशा negative हो जाएगा. अच्छा, Vivek, maybe you are getting confused. Vivek is suggesting sir D less than 0 along with leading coefficient negative. अरे नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, मैं देखो दिखाता हूँ. D इनका वे कह रहे हैं कि सर D less than 0 और A less than 0 दोनों को एक साथ. This has to hold true when I want the graph to be completely below the x-axis. मुझे completely below x-axis नहीं चाहिए. देखो ध्यान से. Vivek, what you are suggesting is this. That is definitely one of the answers. I'm not saying that this is not the answer. It is the answer. Clearly f of 2 is negative, f of 4 is negative, right? No issues. F of 2 negative, f of 4 negative, no issues. But this is not the only answer. The answer can also be there if I plot a graph of this sort. See this graph. Or in fact, if I am opening upwards, so let's say this graph. This is f of 2. This is f of 4. See, check this out. F of 2, f of 4. Is it completely negative? From 2 to 4, it should be negative. That's it. Because for t belongs to 1 to 2, my y value will be belonging to 2 to 4, right?
तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि 2 से 4 के बीच में इसको हर हालत में नेगेटिव होना है, खत्म, उस पर नेगेटिव होना है, आगे पीछे होना हो कुछ लेना देना नहीं है मुझे, हमेशा होता रहे। 2 से 4 के बीच में this has to be negative, so this has to be, I have to make sure that my graph is negative from 2 to 4, that's it. Beyond which it is greater than 0 or less than 0, I don't care. I just need this part, right? We can also have a graph of this sort also, see, f of 4 negative, f of 2 negative, there's also a possibility. So there are a lot of possibilities are there, and that's the reason why I'm putting up these conditions. Okay, I hope Vivek, you got the difference clear. D less than 0, A less than 0, it's only when entire graph has to be negative or below the x-axis. Alright, okay, that's only the case. When I want it to be completely negative, only in that case this will happen. Here I want my quadratic to be negative only from 2 to 4. And that's why the theory of graph becomes interesting. And since it's a rankers batch, I'm discussing this much. Wow, it was a lovely discussion. I thoroughly enjoyed it. So let's quickly see. अब condition क्या क्या आ गई थी मेरे पास में, तो पहले f of 2, f of 4 से ही निकाल लेते हैं. So my quadratic became f of y is equal to y square minus of p minus 4 times of y plus 9p by 4 less than 0. The first one says that f of 2 less than 0. Let's quickly see what is the condition on p that we are getting here. So 4 minus 2p plus 8 plus 9p by 4 is negative. So we'll get this as 4 plus 8, 12, and minus 2p plus 9p by 4 is going to give me nothing but what, p by 4. So this implies that p by 4 is actually less than minus 12. So p is less than minus 48. Okay, from this first condition f of 2 less than 0. I have to take the intersection of all of them. Okay, then if I'll go for f of 4 negative, careful है ना इस चीज पे तो थोड़ा, ठीक है? Okay, so इससे बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है ठीक है. तो और एक कंडीशन ये भी होनी है कि x वर्टेक्स जो मेरा आना चाहिए वो 2 से 4 के बीच में नहीं आना चाहिए. इट हैज टू बी लेस देन 2 और इट हैज टू बी ग्रेटर देन 4. ठीक है, मेरा x वर्टेक्स को 2 से 4 के बीच में नहीं आना है. पर इन दोनों से पहले निकाल लेते हैं. तो f ऑफ 4 क्या हो रहा है? f ऑफ 4 हो रहा है भाई मेरा 16 माइनस ऑफ 4p प्लस 16 प्लस 9p by 4 less than 0. So minus 4p plus 9p by 4 is gonna give me nothing but what? 9, 4, 4, 16, 5, 7p by 4. So we'll get this 7p by 4 is greater than 32. So p is greater than 128 by 7. Oh, can you see only just these two conditions I was saying? The first one is saying p less than minus 48. Okay. Second one is saying p greater than 128 by 7. What is the common intersection of them? What is the intersection of both of them? Null set. मुझे दूसरी कंडीशन पर पहुंचना ही नहीं पड़ा. बट आई लव द क्वेश्चन दैट पीपल हैव आस्क्ड मी. प्लीज कीप आस्किंग द क्वेश्चन बिकॉज दैट विल ओनली मेक यू मोर केपेबल ऑफ लर्निंग. जितने अपने डाउट्स को क्लियर करोगे ना बेटा, जितने अपने अपने क्वेश्चंस जो भी तुम्हारे रेज हो रहे हैं उनको पूछोगे, उनसे उनका सोल्यूशन निकालोगे, राइट? एवरी टाइम यू गेट द सोल्यूशन ऑफ अ सर्टेन डाउट, योर डाउट गेट क्लियर्ड, यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यू आर मोर confident towards your examination. To keep asking. I thoroughly enjoyed the discussion. Thank you so much for the discussion. D option become the correct answer. Moving ahead for the next problem. अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? पानी पी लेता हूँ, बढ़िया डिस्कशन था. ओके, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क लिए दे रहा हूँ. ठीक है पब्लिक, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क लिए दे रहा हूँ, फटाफट नोट कर लो इसको. मैं क्वेश्चन होमवर्क लिए दे रहा हूँ. बोल रहा है इफ साइन पी इंटू एक्स स्क्वायर, अभी खत्म नहीं हो गया सेशन, मैं और भी पढ़ाऊंगा, सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए दे रहा हूं. साइन पी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1. तो मुझे आई हैव टू मेक दिस क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और इन फैक्ट आई विल पुट इट अप इन दिस वे. इफ यू रीराइट दिस इक्वेशन इट विल बिकम साइन पी इंटू एक्स स्क्वायर minus 2x plus q minus 2 greater than or equal to 0. I want this quadratic to be greater than or equal to 0 only for x less than or equal to 1, provided x, the angle P belongs in the first quadrant or second quadrant. In first quadrant or in second quadrant, sin P कैसा होता है? What is the sign of sin P in first and second quadrant? Positive. So basically sin P is strictly lying from 0 to 1. ठीक है पब्लिक, sin P कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से 1 के बीच में, सिर्फ उतना ध्यान रखना है आपको. So I want this quadratic to be greater than or equal to 0 for every x greater than or equal to 1. x greater than or equal to 1 के लिए सारा का सारा तुम्हारा greater than or equal to 0 होना चाहिए. ठीक है?
Frankie sir, I'm in class 12, J23 should I? Yes, of course you can, you should definitely बेटा. quadratic तो पढ़ चुके हो ना, तो उसको और अच्छे लेवल पे सीखने में क्या बुराई है? Okay, so sin p positive fraction definitely is going to be opening upwards parabola, ये पक्की बात है. मैं चाहता हूं कि x 1 या उससे छोटा जब भी है, so it's like this, right? It's an opening upwards parabola, but I want that for x less than or equal to 1, this should be strictly greater than 0, somewhat like this. See, before 1, the graph is clearly above the x-axis. This kind of graph that I want. Condition आप लगा सकते हो अपने हिसाब से, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आंसर आपको मैं बाद में दे देता हूँ, पर ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए सब लोग. नोट कर लिया? ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एकदम सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किया है और अंकल से इसलिए आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. सर इन प्रीवियस क्वेश्चन व्हाई यू चेंज द साइन सडनली? किस क्वेश्चन में मैंने साइन चेंज सडनली किया? मैंने तो नहीं साइन चेंज किया किसी में भी. मेरा बेटा मैंने कोई साइन चेंज नहीं किया. ओके चलो, पिछली वाले क्वेश्चन में लेस देन 0 हो रहा था, इस वाले क्वेश्चन में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहा है, तो दोनों एग्जांपल हो जाएंगे. अच्छी बात है. ओके, सो एज आई सेड, दिस वाज अ क्वेश्चन, यू मस्ट हैव नोटेड डाउन. इट शुड बी ओके. आंसर मैं इस क्वेश्चन का बता देता हूँ. इट विल बी सी एंड डी, दैट्स ओके, दैट्स समथिंग एल्स. पर आंसर को देख करके क्वेश्चन सॉल्व मत करिएगा, ये आपके नोट्स का पार्ट होगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट चैप्टर. इस तरीके की फ्रैंक, अगर तुमको फ्रैंकी, इफ दैट्स योर नेम, इट्स अ लवली नेम, सो इफ यू आर रियली फ्रैंक विद योर थॉट, सो अगला चैप्टर क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, पर अभी मैं क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूँ और आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक एज वेल एज द पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक, द रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक, all those information at a very good level. In fact, the previous question was beautiful discussion. Now, आगे बढ़े रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन की तरफ. वेदाश्री क्या पूछ रही हो बेटा? ये प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या साइन चेंज कर दिया था बताओ? मैंने साइन चेंज नहीं किया बेटा. आई डिड नॉट डू एनीथिंग. t was from 1 to 2, so y became 2 to 4. मैंने f of 2 less than 0 किया, f of 4 less than किया. क्यों? क्योंकि they were asking for this quadratic to be negative. तो if I want my quadratic from 2 to 4 to be negative, something of this sort, like this, okay? तो ऐसा तो होना ही होगा ना भाई. ठीक है, चलो, और ये दो कंडीशन लगा दी तो इतना काफी है. तो बट बोथ द कंडीशन शुड होल्ड ट्रू एट द सेम टाइम. f of 2 less than 0, f of 4 less than 0. Okay, perfect. Now, as I said, I'm moving on to the next part of the concept, which is range of rational expression. Then rational में क्या होता है? Numerator your polynomial, denominator also a polynomial. Okay, let's see this. So cross multiply. This is the mechanism for it. This is the algorithm for doing it. You cross multiply, make a quadratic in x, right? You get a polynomial upon polynomial like 2x plus 3 upon x square minus 3x plus 2, something of that sort. They want the range of this one. So you assume it to be some y, okay? And then you cross multiply and make the quadratic in x. So you assume this expression to be y, cross multiply, make a quadratic in x. जब आप x में quadratic बना लोगे, then make d greater than or equal to 0, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन में वो बोलता है कि x can take up all real values. अब अगर x सिर्फ रियल वैल्यूज ले सकता है, मतलब क्या हो रहा होगा? रूट्स हर हालत में रियल ही हो रहे होंगे. और अगर रियल हो रहा होगा मतलब क्या हो रहा होगा भाई? मतलब d has to be greater than or equal to 0. ओके, चले आगे. तो इन सारे क्वेश्चंस की एक ही दवा. देयर इज ओनली वन रेमेडी फॉर ऑल सच क्वेश्चंस. यू अज्यूम द एक्सप्रेशन टू बी एज y. पूरे रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप y अज्यूम करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्वाड्रेटिक बनाइए x में, एंड देन मेक d greater than or equal to 0. Alright, assume the expression to be as y, cross multiply, generate a quadratic in x, then apply d greater than or equal to 0. You're sorted. You'll get an inequality in y, and that will give you the range. What is y? Y is that expression only, right? If the value of this expression is y, and if I get an inequality on y, let's say something like 1 to 7. So basically this expression will be lying from 1 to 7. So what is the range of this expression? 1 to 7. Just for the illustration purpose, I have taken up these numbers. It's not an example that you need to understand. Om Sharma ji, नमस्कार. देर है, दुरुस्त है. F says that, चलो क्वेश्चन करना शुरू करो फटाफट. F says that R to R, fx equal to 3x square plus px plus q upon x square plus 1 if the range of this function is minus 4 to 3. तो वो बोल रहा है कि जो अगर इसको आप y मानोगे, so if I need the range for this rational polynomial expressions, you immediately assume it to be y. Right? They are saying that this expression is lying from minus 4 and between 3. Lying from minus 4, so equality is minus 4 and between 3. Sir, what is schedule for maths class? It's always 2 o'clock. It's always 2 o'clock Monday and
Friday. ठीक है, एज फार एज द करंट सेशन आर कंसर्न, मैं अपने सेशन की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है. माई मैथ सेशंस which I am teaching is always on 2 o'clock Monday and Friday. मैं हर सोमवार और शुक्रवार को आपको 2 बजे मिलूंगा, ठीक है. बट एक लंबा चौड़ा शेड्यूल है. सो यू विल बी मीटिंग अतिउल्ला सर, यू विल बी मीटिंग मृणाल सर, यू विल बी मीटिंग राखी मैम, एंड आई गेस भूमिका मैम विल ऑल्सो बी हियर. तो सब बहुत सारे टीचर मिलेंगे भाई, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं. हम सब लोग बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, मुझसे सब बेहतर ही है, ठीक है. तो लेट्स क्विकली पुट इट अप इन दिस वे कि शेड्यूल आप वहां से पिक करिए. प्लीज पिक अप द शेड्यूल फ्रॉम द चैनल पेज. देयर इज अ प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस इज देयर एंड यू कैन गेट द शेड्यूल फ्रॉम देयर. ऑलराइट, सो make sure that you are aware of and press the bell icon. You will be always getting the notification. Okay, math session, my math session will be always on 2 o'clock Monday and Friday. Perfect. ठीक है. अब ये बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक जो है, तो ये रैशनल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपका -4 से 3 के बीच में लाइक कर रहा है. दिस इज ऑलरेडी गिवन टू मी. तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं अपनी क्वाड्रेटिक से, तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को y मान लेता हूँ. मैंने y माना, सो आई गॉट 3x² + px + q अपॉन x² + 1. ठीक है. अब मुझे पता है कि y पे एक रेंज आएगी, बट आई नो दैट y इज लाइंग फ्रॉम -4 to 3. ये बोल रहा है ना बेटा, ठीक है. और ये -4 से 3 आ रहा होगा, मतलब वे भी कब जनरेट हुआ होगा, यहाँ -4 आ रहा होगा, यहाँ 3 आ रहा होगा, ठीक है. मतलब इस तरीके की इनइक्वालिटी हो रही होगी तुम्हारी, ऐसे कुछ हो रहा होगा ना. ओके, सो अगर आपके क्रिटिकल पॉइंट -4 3 मिल रहे हैं, मतलब ओरिजिनली क्या हो रहा होगा, y + 4 × y - 3. ये क्या दे देता है, ये दे देता है आपको y² + y - 12. ओके, सो दिस इज व्हाट माय ओरिजिनल इनइक्वालिटी वुड हैव बीन, y² + y - 12 = 0. ठीक है. सो दिस कुड बी वन मेथड, है ना. ये एक तरीका हो सकता है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आप इनइक्वालिटी निकालिए, यहाँ से जनरेट करिए, देन यू कैन सॉल्व इट. अदरवाइज आप एक और काम कर सकते हो. देखो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ. आई कैन क्रिएट अ इनइक्वालिटी दैट जनरेट क्वाड्रेटिक इन x. तो वो तो करने, स्टैंडर्ड प्रोसेस इज ऑलवेज देयर. अज्यूम y, क्रॉस मल्टीप्लाई, जनरेट द क्वाड्रेटिक. So we'll get this as 3x² plus x times of p only. Okay, so plus px. Okay, and so y². Okay, so let me cross multiply. So we'll get this as 3x² plus px plus q is equal to x² y plus y. When I rewrite this quadratic, it will become 3 minus y times of x² plus px plus q minus y equal to 0. Right, see, f is such that it is from R to R. So x can take up all real values. It will take only real values, right? Only real values. तो अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट सिर्फ और सिर्फ रियल हो सकते हैं, if x belongs to only real, its discriminant has to be greater than or equal to 0. Let's quickly do that. We'll be writing b² p² -4ac, that is -4 times of 3 minus y into q minus y greater than or equal to 0. ठीक है, ये एक तरीका है आपको करने का. आप उससे ये जो y में इनइक्वालिटी है वो आप जनरेट कर लीजिए, नॉट p² या ओके, ठीक है. सो d greater than or equal to 0 आएगा आपका. सो यहाँ से आपको ये इनइक्वालिटी मिल गई y के ऊपर में. और दूसरी इनइक्वालिटी हमने क्या बनाई थी, y² प्लस y -12 लेस देन और इक्वल टू 0. आप पूरा सॉल्व करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ये बन के आ जाएगी. कंपेयर कर दो रेशियोज को, आपको आंसर मिल जाएगा. दिस इज वन अप्रोच. दूसरा अप्रोच देखो, एक ये भी हो सकता है, जस्ट बिकॉज पीपल आर आस्किंग, दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग इट. ओके, और ये रैंकस है, इसलिए मैं 2 मेथड डिस्कस कर रहा हूँ. 3x² plus px plus q upon x² plus 1. I know that this expression is what? Lying is less than 3 but greater than or equal to -4. ठीक है. मैं x² plus 1 is always positive, right? So I can always multiply into the inequality. तो मैं x² plus 1 को पूरी inequality से multiply कर देता हूँ. So we got -4 times of x² plus 1 less than or equal to 3x² plus px plus q is less than 3x² plus 3. अब देखो 2 इनइक्वालिटी है, ये तुम्हें चाहिए कि ये भी होल्ड करे, ये भी होल्ड करे. सो आई वांट बोथ इनइक्वालिटीज टू होल्ड ट्रू. पिक अप दोस 2 सेपरेट इनइक्वालिटीज. अब देखो 2 इनइक्वालिटी आ गई मेरे पास में. फर्स्ट वन इज -4x² -4 लेस देन और इक्वल टू 3x² plus px plus q. राइट, इफ आई रीराइट इट, इट विल गिव यू 7x² plus px plus q plus 4 greater than or equal to 0 for all x belongs to R. Now, if a quadratic is always positive, right, if a quadratic is always positive, this quadratic opening upwards is always positive. What does that mean? D has to be less than or equal to 0. So for this part, you apply D less than or equal to 0. Is that okay? All right, great. At the same time, you can also do it by this way, like 3x² plus px plus q less than 3x² plus 3.
right? So from here you can cancel this 3x square. Is that okay? Pretty simple one, very simple one. So from here we'll be talking about px plus q less than 3 for x belongs to R. So these are the two inequalities that I have, right? Get a condition from here and then solve it. दोनों ही मेथड तुमको आंसर्स देंगे बेटा, ठीक है? तो आंसर्स दोनों से मिलने वाला है, उसको लेकर के टेंशन नहीं लेना. जो पिछला वाला मेथड दिया था मैंने आपको, दिस इज ऑल्सो अ प्रीटी गुड एंड प्रीटी स्मार्ट मूव. आप इसमें क्वाड्रेटिक, मैं इनफैक्ट एक से सॉल्व कर देता हूँ. तो मैं अगर इससे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ठीक है, यहाँ पर, तो आप इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए. मैं लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, देखना ध्यान से. सो पी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 3q. So I'm writing this as actually 3q minus 3y minus qy and plus y square greater than or equal to 0. So थोड़ा rearrange करते हैं. So it will become actually p square minus 12q plus 12y plus 4qy minus 4y square greater than or equal to 0. है ना? अब आपको y में तो inequality बनाना है बेटा. तो inequality देखो आपकी बन के आ जाएगी. यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह बन रही है, ठीक है. सो 4y स्क्वायर और y का टर्म आप उधर लेके चले जाइए. सो 4y स्क्वायर माइनस ऑफ y टाइम्स 4q प्लस 12 एंड देन द कांस्टेंट टर्म विच इज एक्चुअली 12q माइनस p स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0. ठीक है. इसी इनइक्वालिटी को अगर मैं रीराइट करके इसके बगल में लिख दूँ, सो दिस एंड द अदर वन, इनफैक्ट यहाँ लिख देता हूँ दिस साइड, इट्स एक्चुअली y स्क्वायर minus y times of q plus 3 and plus of 3q minus p square by 4. 3q minus p square by 4 less than or equal to 0. Both the inequalities are going to give you the same solution set. That's what is the question, right? So when both the inequalities are going to give you the same solution set, sir what inequality sign opposite होगा? क्या आंसर कुछ और आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, आंसर कुछ और नहीं आएगा बेटा. कोई inequality sign opposite नहीं हो रहा है. It's just that कि आपको दोनों inequality देखो, ये में जो y स्क्वायर का टर्म था वो पहले नेगेटिव में था यहाँ पे, है ना? वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. अच्छा ओके, यहाँ से अब थोड़ा दिख रहा है ना? मैं गायब हो जाता हूँ, मैं गायब हो गया इधर से, ठीक है. तो देखो यहाँ पर ये 4y स्क्वायर था ना, ये इधर नेगेटिव में था, ये माइनस साइन से ये इधर आ गया, तो प्लस 4y स्क्वायर हो गया. सो ये जो इक्वलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 थी, अब वो इस तरफ आकर के लेस देन और इक्वल टू 0 हो गई. मैंने बस यही बोला है. तो फाइनल इक्वलिटी ये आएगी. अब क्या करो, रेशियो कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, है ना? जैसे उनको इक्वेट करोगे रेशियो आएगा बेटा. इक्वलिटी सेम इनइक्वालिटी नहीं है, रेशियो सेम होगा उसका. तो जैसे आप रेशियो इक्वेट करोगे तो यहाँ से आपको वैल्यूज़ कुछ मिलना शुरू हो जाएंगी. तो इनफैक्ट q प्लस 3 को आप 1 के बराबर लिख सकते हैं. तो यहाँ से q आपका बन के आ जाएगा -4 और -4 बन के आ गया, और यहाँ पर ये -12 बन रहा है. इसका मतलब आपका p बन के आ जाएगा 0. तो p 0 आ गया, q आपका -4 बन के आ गया. तो p प्लस q विल बिकम mod p प्लस q विल बिकम एक्चुअली mod ऑफ 0 प्लस ऑफ -4 विच इज एक्चुअली mod 4 और सिंपली 4. ठीक है. तो दोनों मेथड आगे होंगे. सर पीछे नहीं दिख रहा था, सही है, ओके बढ़िया. सर मैंने आईटी क्रैक कर लिया, बट स्टिल योर सेशन इज अट्रैक्टिंग मी. ऑलराइट, कांग्रेचुलेशंस क्षितिज, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, so happy. See, when you start learning, you really start enjoying your preparation. So wherever you get good content, you start enjoying it. And believe me, till this date, I have qualified IITs many years ago, and after that I produced many IITs. But in spite of this fact, even now, if I get a question which is really tricky one, it always excites me. And even if I'm like watching somebody else's, like Bhumika ma'am's video or anyone else's for that matter, not just like any maths teacher, if I'm getting a good content which is making me getting into getting a little high, if you put it up in that way, so that really amazes me. So I can relate to you, buddy. I can relate to you. Okay. Yes. Okay. Now, consider an unknown polynomial which when divided by t minus 3 and t minus 4 leaves remainder as 2 as 1. ये क्वेश्चन हमने किया है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्विकली कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि नॉट क्वेश्चन ही किया है. इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने फटाफट सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है. और फिर बाद में वो बोल रहा है कि एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज रीड द क्वेश्चन. अरे कलर चेंज हो जाए भाई, नहीं चेंज हो रहा है, इसको पता नहीं, इसका मन नहीं है. क्यों? येलो कलर आ गया, ये शाबाश. एवरीवन प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन. Consider an unknown polynomial which when divided by t minus 3, t minus 4 leaves remainder 2 and 1. Okay. ठीक है, respectively. gt be the remainder. See, when you're dividing by t minus 3 and t minus 4, second degree terms, right?
Okay, so gt be the remainder when the polynomial is divided by t minus 3, t minus 4. So if the divisor is of second degree, clearly I can say that divisor, what is the degree of divisor? So divisor is degree 2. What does that imply? It implies that remainder degree will be what? So remainder must be of degree 1. You can assume it to be sine ax plus b. Something of that sort. Sure? Can we assume? Okay, alright. So मेरा जो gt है, that's actually at plus b, because I have to assume the variable as t only, not x. Okay, मैं at plus b लिख देता हूँ. So my gt is at plus b. Now they're saying that if you once you have got the expression for gt, right, which is at plus b, so that expression upon this quadratic, and then you see how it turn out to be. चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं, है ना, थोड़ा सा रफ्तार रखेंगे इस क्वेश्चन में. तो अननोन पॉलिनोमियल निकाला हमने यहाँ से, इनफैक्ट पूरा इक्वेशन वगैरह. सो इफ आई टेक माई remainder gt as nothing but what? At plus b, and I know that when you divide it by t minus 3, so g of 3 is equal to 2 and g of 4 is equal to 1. ये दो वैल्यूज दे रखी हैं उसने. They have given me, right? When you divide by t minus 3, that is g of 3, the remainder g of 3 will be 2. That's given to me. And when you divide by x minus 4, the remainder will become 1. So g4 is 1. Okay, so let's quickly figure it out. So g3 equal to 2, that implies that 3a plus b equal to 2. Fair enough. And g4 equal to 1, that is actually 4a plus b equal to 1. This is what, so I've got two equations and two unknowns, solve them simultaneously, subtract them. So I'll be getting 3a minus 4a, so b get cancelled, you'll be getting the a equal to minus 1. Okay, so I got a equal to minus 1. When I got a equal to minus 1, then b value will become equal to 5, which implies that my gt will become actually 5 minus t. Perfect. What is my rational polynomial now? So f of t will become actually 5 minus t upon t square minus 3t plus 2. They are asking for the range of it. What is the method? Assume it to be y. Sir, आप पार्टी कब दोगे? क्षितिज मैं बिल्कुल दे दूंगा, उसके लिए तुम्हें बैंगलोर आना पड़ेगा, क्योंकि right now I'm in Bangalore. So please come here, meet me. I'll make sure that we'll have a good time. GT is other function. GT is actually the remainder. So let GT be the remainder. ठीक है, रोशन ध्यान से पढ़ो बेटा, देखो क्या लिखा है उसने. Let GT be the remainder. तो अगर आप एक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या होगा? लीनियर होगा ना, इसलिए मैंने उसको at plus b माना था. So since it says that GT be the remainder, when I'm dividing it by a quadratic term, right? So when you divide it by t minus 3, t minus 4, so GT is the remainder, that has to be a linear, which I assume it to be at plus b. फिर मैंने रिमाइंडर की वैल्यूज को उसको यूज किया. ओके, कंसीडर अननोन पॉलिनोमियल. हाँ, वो अननोन पॉलिनोमियल है बेटा. पॉलिनोमियल कुछ px टाइप की होगी या pt टाइप की होगी. इसका डिग्री कुछ भी हो सकता है. दैट कुड बी एनीथिंग. हम डिवाइड कर रहे हैं t minus 3, t minus 4 से, तो pt इज द ओरिजिनल पॉलिनोमियल t minus 3 into t minus 4 into another quotient co t plus remainder gt. That's how it is happening. अभी क्लियर है रोशन? प्लीज क्लियर इट आउट. रोशन मैं फिर से लिख देता हूं अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो. Original polynomial is like unknown polynomial is like pt. Okay, then I'm trying to divide it by t minus 3 into t minus 4. Because of that I'm getting a quotient as nothing but q times of t, not q times of t, sorry, qt, and because of that the remainder turn out to be gt. अब अगर तुम जैसे t को 3 पुट करोगे यहाँ पर, क्योंकि g3 is equal to 2 दिया हुआ है, then that's how you connect it. Roshan, is that clear? रोशन प्लीज क्विकली रिस्पॉन्ड. तो बताओ मैं फिर आगे बढ़ूं, क्योंकि ये इस चीज में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए. ओरिजिनल पॉलिनोमियल कुछ और है, मैं सिर्फ जीटी की बात कर रहा हूं और उसकी वजह से मैंने एफटी क्रिएट किया है. इज दैट क्लियर रोशन? क्विकली रिस्पॉन्ड. तो आप अगर मैं रोशन बताना बेटा, ठीक है, कुछ दिक्कत हो तो बोलना, मैं तुरंत आ जाऊंगा उस पर वापस. सो वी गॉट दिस टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2. अब मेथड क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, राइट? एंड वंस अगेन टी कैन टेक एनी रियल वैल्यूज. कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं एफ ऑफ टी की. लेट्स डू दैट. हम क्या इंतजार कर रहे हैं? खड़ो, फटाफट सॉल्व करो. सो विल बी गेटिंग दिस एज yt स्क्वायर. इनफैक्ट इसी को मैंने y मान लिया. t belongs to all real numbers itself. It will become yt square minus 3ty plus 2y equal to 5 minus t. Let's rearrange the quadratic. So in terms of t only, okay? So we'll get this as yt square plus t times of 3y, in fact 1 minus 3y, and plus 2y minus 5 equal to 0. I have to make this discriminant greater than or equal to 0. Let's do that. So 1 minus 3y the whole square minus 4y into 2y minus 5 has to be greater than or equal to 0.
inequality. Let's quickly figure it. Okay, yes sir, perfect. तुम्हारे answers थोड़े late आ रहे थे बेटा, मतलब response थोड़ा late आ रहा था. That's why I asked this question. Very good. I'm glad that you understood this thing. And it is important that every one of you should be understanding it very well. Motive ही यही है यार, हम सिखाने आए, जितना सिखाएं एकदम rock solid होना चाहिए. So when I open it up, it will give you 9y square minus 6y plus 1 minus of 4y into 2y, that is minus 8y square, and plus of 20y greater than or equal to 0. Arrange करते हैं quadratic को फटाफट. So we'll be getting this as y square and plus 14y. Okay, so y square plus 14y plus 1 greater than or equal to 0, because 20y minus 6y is going to give you what? 1 only, right? So when I factorize it in terms of irrational roots, so what is the quadratic? Quadratic is y square plus 14y plus 1 equal to 0. If I just want to mention its root as alpha and beta, so alpha and beta will become actually nothing but minus b, that is minus 14, plus minus under root of b square, that is 256. So b 56 minus 4 upon 2. Okay, so that's going to be nothing but what? Simply minus 7 plus minus 4 root 3. Right, exactly, right? So, so this will become actually 4, 8, 1 beta, 64, 3. Perfect, okay. So, the inequality will become actually this sort. I have another page. No, I don't have another page. So, this point will become minus 7 plus 4 root 3. This will become minus 7 minus 4 root 3. This critical point. I'm just solving the inequality, okay? So don't worry about anything else. And this is how the graph will go. So what will be the answer? Minus infinity to minus 7 4 root 3 to minus 7 plus 4 root 3 to infinity. That's exactly the C option will become the correct answer. Okay, अच्छा लोग कुछ लिख रहे हैं. Okay sir, bye. I have to leave for celebration at my Akash Center in Varanasi. Congratulations, Kshitij. I'm hopeful that you and some amazing session on YT and AI. Okay, wow, congratulations, Kshitij. It's a lovely rank, 2280. Many congratulations, buddy. Many congratulations. Okay, so for yes, my bad. It was like 156. वो ठीक बोल रहा है. It's not 256. It's like 196, so it will become 192 actually, and because of that only it will become 4 root 3. ठीक है? So वो 192 बन जाएगा वो. तो minus 7 plus minus under root of 192 by 2. ठीक है, वो 4 को ले जाकर के when you simplify not, it will give you under root of 48, which will be 4 root 3. ठीक है, अभी ठीक है? चलो, perfect. Alright, so C option become the correct answer. Is that okay? Alright, good. चलो, बढ़िया. अब मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आप फटाफट सॉल्व करेंगे मेरे लिए. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल. वो बोल रहा है कि अगर ये एक्सप्रेशन लेस देन 5 है, इनइक्वालिटी टाइप का क्वेश्चन है, राइट? तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. सी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज व्हाट? x plus 1 the whole square plus 1. इसको ऐसे लिख सकते हो ना बेटा? You can also write this as x square plus 2x plus 1 plus 1. So this is clearly greater than 1. Or in general, this expression is always what? Positive. So denominator is always positive. You can cross multiply. तो calculation तो बड़ा simple है. ax square plus 3x plus 4 is less than 5x square plus 10x plus 10. Very simple. ठीक है, let's quickly arrange that. Hello sir, and sorry for late joining. That's okay, Sonu, but you make sure that you are into the live session because your understanding will be even better for you, right? Okay. So यहाँ से when I rearrange the quadratic, it will become actually 5 minus a. Rather, let me put it up in this like a minus 5 or something. So I'll be getting this as a minus 5x square. Okay. Plus 3x minus 10x is actually gonna give you minus of 7x. All right. And the last one will give you 4 minus 10, which is 6. Less than 0. ठीक है, ये दिया हुआ है. वो बोल रहा है all x belongs to R के लिए. Now this quadratic is less than 0 for all x belongs to R. So when does the quadratic becomes always negative? When its coefficient of x square is negative and as well as discriminant is negative when you take the intersection of both of them. Most importantly. ठीक है? Okay, d greater than 0 apply और दीजिए sir. Yes, d greater than 0 नहीं बेटा, d less than 0. Always negative है. तो पहले मुझे a minus 5 को negative करना होगा. साथ ही में मुझे इसके डिस्क्रिमिनेंट विच इज एक्चुअली b स्क्वायर 49 माइनस 4ac विच इज 24 टाइम्स ऑफ a माइनस 5 और लेस देन 0. तो यहाँ से आ गया a लेस देन 5, यहाँ से आ जाएगा 49 माइनस 24a प्लस 120 लेस देन 0. दैट इज 24a इज ग्रेटर देन दिस इज 129 49 b स्क्वायर. One moment, just give me a minute. So x square plus 3x plus 4 less than x square plus 10x plus 10.
5a minus 5 minus 10x minus 10. So it will be minus 6. My bad. It's a small error that I made, not small, a blunder particularly. In fact, this will become plus 420 plus minus 120. Okay, so this will be minus 120. Got it. So 24a is actually, 24a will be less than, so this is 49, 129, 49, 50, 70, 71. So I'll get this a less than 71 upon 24. Right? So ये calculation कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, और this has to be less than 0, d less than 0 के हिसाब से, so we get a less than 71 by 24. ठीक है, perfect. Intersection चाहिए था ना बेटा. See, one condition I got a less than 5, other I got a less than 27 by 4, and I have to take the intersection of this. So if a number is less than 71 by 24, number line में देखो ना बेटा, ये तुम्हारा 70 upon 24 आ रहा है, ये 5 आ रहा है. एक condition बोल रही है less than 5, एक बोल रहा है, another condition says less than 71 by 4. So this is the common zone, right? So B option become the correct answer. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. आर्यन गोयल -6. हाँ, वो ठीक कर दिया मैंने बेटा. रोशन, बहुत अच्छी बात है बेटा. आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर रिस्पॉन्डिंग सो वेल. हे बडी, 71, 24, 71 बाय. यू शुड पुट दैट ऑब्लिक साइन ऑल्सो. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. रेंज ऑफ ए फॉर विच दिस इज ऑलवेज नेगेटिव. देखो फिर से वही बात है, नीचे एक क्वाड्रेटिक मिल रहा है जो हमेशा पॉजिटिव है. सी दिस इज व्हाट, दिस इज x स्क्वायर minus 8x plus 16 plus 16, which is actually x minus 4 the whole square plus 16. ऑलवेज पॉजिटिव है ना. तो देखो करने क्या वाले हो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं खड़ाखड़ सॉल्व कर देता हूँ. सो वी गॉट दिस 2 times of a plus 1. मुझे a की वैल्यू चाहिए जिससे ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव हो. सो मैं लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन को ठीक से. 9a plus 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x plus 32 इज ऑलवेज नेगेटिव. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इट इज ऑलवेज नेगेटिव. क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x plus 32, you can easily dissolve it into the 0. Yes or not? I can multiply x square minus 8x plus 2. This denominator is always positive. Denominator is always positive. Entire ratio numerator upon denominator is negative, which means that my numerator essentially has to be what? Negative only. और एक क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव कब होता है, जब उसका ग्राफ इस तरीके का हो, मतलब a less than 0 and discriminant less than 0, both of them less than 0. What are you waiting for? फटाफट कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो. मुझसे पहले निकालने की कोशिश करो, जल्दी करो. आंसर चाहिए मुझे. So I have the condition a less than 0, then I have also the condition as d less than 0, and what was the inequality? Inequality was ax square plus 2 times of a plus 1 times of x plus 9a plus 4 less than 0, discriminant less than 0. So 4 times of a plus 1 the whole square minus 4a times of 9a plus 4 less than 0. 4 and 4 is gone. A square plus 2a plus 1 minus of 9a square minus 4a less than 0. Let's rearrange the quadratic. So what I'm going to get it as, I'm going to get this as 8a square plus 2a minus 1 greater than 0. That's going to give me the factorization as what? It's going to give me nothing but simply minus 1 upon 2 and all this. So it's going to be 4a plus 1 and 2a minus 1. Okay, so 4a minus 1 into 2a plus 1. Yes. When you generate the wave, what will be the wave? Critical points will be actually 1 by 4 and minus 1 by 2. I want it to be strictly greater than 0, right? So from here a belongs to minus infinity to minus half union 1 by 4 to infinity. But I had another condition. What was the other condition? A less than 0. You need to take the intersection of these two. So a has to be negative essentially, because there is the quadratic has to be always below the x-axis. A negative and this condition. Take the intersection of these two, what do you get? Only this interval as the final answer. That's how I'm going to report it. B option become the correct answer. That's all for the day from my side. रोशन जी, थोड़ी सी गलती कर दी आपने. सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. Be little careful, okay? Alright, so B option became the correct answer. And now I am quickly putting a pause on this. अब देखो level बढ़ता जाएगा बेटा. So slowly the level will increase. Alright? So Shreya Simon, if you are here, I hope the language has never become a difficulty for you, right? You must have understood, you must have learnt everything very well, or picked up all the concept which I was trying to communicate, or Shakti for that matter. The folks who were really worried about the language issues and all, I've tried to keep as versatile as possible, or as vernacular as possible. Plus, second thing, when Mayank Kumar, this is a very, very, very tough question to ask, right? Whenever you are ready, I'll say it in that way.
Okay, Mr. Mayank Kumar. But believe me, it will be done properly in the certain time frame and with all the seriousness. Okay, so that's what I can surely commit you. Okay, so with this I'll be signing off. The next time जब हम मिलेंगे, next time when we gonna meet, quadratic का एक और better session आएगा और अब हम location of roots की तरफ बढ़ रहे हैं. तो अगला सेशन धांसू और धुआंधार होने वाला है. The next session is going to be amazing, right? And it is going to be a pretty high quality and great in depth. So make sure that all of you are learning as much as you can. The folks who could not pick up any particular thing, you can like rewind the video or watch it as many as times as you want to. Okay. So with this, I wish you all the best. Take a very good care of your health, as well as always help the needy ones every time you are capable of. Goodbye, folks.